Red Cross, Model College, Principal Sir, esteemed Chief Guest, Dr. Panindem Singh Sir, esteemed Guest of Honor, Ramchandra Mishra Sir, my colleagues and my dear students. Today I have been privileged to be here to say something about the World AIDS Day on the behalf of the Red Cross Society of our college. Actually, I want to speak something. I myself volunteered to the Red Cross officer that we have. जे मु रेड क्रॉस वर्ल्ड एड्स डे दिन मु किछि कहिदेबी बोली ताऊ कहितिली. I have prepared a PowerPoint presentation and having a very elaborate of HIV and AIDS. And today the World AIDS Day, 1st of December, is being organized successfully from the year 1987. And from that days, it is going on celebrating. We are going on celebrating every year all over the world in the memory of the people, those are suffering with this particular virus and living with that virus with a condition that is called AIDS. And this year the theme of the World AIDS Day is Rock the Ribbon. Rock the Ribbon. This year theme is Rock the Ribbon, and you have this red ribbon along with this AIDS or HIV, and that red ribbon is universal symbol of awareness and support for people living with HIV. In our country, actually, the agency that is called NACO, who take care of all these activities in related to HIV or AIDS. Second slide. So, first question is in our mind, what is HIV? Obviously, it is a virus. The state of that HIV. What is HIV? HIV is human immunodeficiency virus. Okay? So that means it is a virus. And it is obviously a RNA virus having the structure of RNA only, DNA nahi tadare, and it is also known as a retrovirus. And this virus actually makes its host in the human body, and human body's cells are the host of this virus. Next slide. Our human body having certain cells which act as a defensive system for us, that is the white blood cells, you know it. And in that we have a cell that is known as your CD4 cell, which coordinates the body's immunity system. And the particular that virus invade this CD4 cell, which helps us for the protection of this disease, different kinds of infections. Next slide. And this is the life cycle that we have for the HIV, how it replicates inside the human body with RNA, and with our DNA it just insert its
RNA matter, then haploid it again and it come back to the cell. And this procedure when going on, our immunity system never detect that. That is the most largest drawback of this HIV. Your body is not detecting. Even though it is detecting, they are depleting so fast the detector cells, faster than the virus itself multiplies faster than the body, our body sends it. So that is the major drawback, that we cannot able to find the HIV until it we are being infected with it for more than 6 months in our body. So minimum 6 to 8 months is required, and that incubation period is very large, and that is why the HIV is so dangerous for us. आमको थंडा है काश है आम सांगे सांगे जानीपारे जे आमको ये रोगटा होम औषधटा खाईपर, किंतु एथिरे प्रॉब्लम अच्छी जे आम देहरे रहिला परे मध्य आमर इम्यूनिटी को सप्रेशन करके रखुथुबारु आमको ता विषय कौन ज्ञान आसे ना, आम शरीर जानीपारे तेणु जेहेतु आम शरीर जानीपारे ना तेणु तापाई आम कौन प्रतिकार करें ना। बॉडी जो प्रतिकार करुच्ची थ्रू दिस CD4 सेल, they are unable to do it because of the suppression of the immunity system. So that is why it is very dangerous disease actually. And when you know it, जे मत HIV होइछि बोली से तळकु आ तार रेमेडियल ट्रीटमेंट बहुत कम. Next. So HIV and AIDS are two synonyms terms actually. So AIDS माने हमें जानिचे it is acquired immunodeficiency syndrome. Acquired माने जन्मर मो पाखे नथिला मो acquire करिछि नहीं कि from this environment मो acquire करिछि. Then immunity, it's suppressing the immunity of our body and the whole body system and the organ. Then deficiency, then syndrome, a group of conditions, health condition is known as your syndrome. ता माने जन को एड्स हेले भी खाली सबुदिन पतला झाड़ा हो पारे आसे झाड़ा बंद होबनी. तेणु इट इज नॉट अ सिंगल सिंड्रोम जमती आमको ठंडा हरले नाकटा चौक हो जाउची, लंग्स टारे कफ थिला भलिया लागुची, सेमिति कोनोसी पर्टिकुलर सिम्पटम्स नहीं एड्स को बा तम HIV को ट्रीट करिया पाई. HIV will damage the whole body's organ system, not a single one. तेणु ये आमको असुविधा से बेसी रोग रे अच्छी सेटा होची ये कौनसी गोटे ऑर्गन को अटैक करू नहीं, ये टोटल डिफेंस मेकानिज्म को अटैक कर आम सोल्जर मान को ही अटैक कर दउची. तेणु करी आम पई एटा गोटे बहुत हाजार्डस वायरस. Next. So this one is the comparison between what HIV and AIDS. And these are the conditions you can have. Then question is, when we say that we have been acquired with AIDS, केम जानिबा ताकू जानिया पाई हेले we have to count our CD4 cells. CD4 cell count जदि between 500 to 1500 रुए per milliliter of blood, then less than that is the condition. AIDS viral load is there and like this. And the important thing I underline that it is opportunistic infection. That is important. Opportunistic infection. What is that? Suppose आम पिला माने डेली बारिक दुकान जाउचंती, डेली बारिक दुकान जाउचंती, सप्ताह को दिथर जाउचंती, दाढ़ी के काटुची, के बाल काटुची, के सेविंग होउची विभिन्न जगह रे. तम माने भी झियो माने जाउचो पार्लर, सीए जो कैंचीटा यूज करुची, सीए जो खुरटा यूज करुची, जदि सेगुड़ाक स्टेराइल है नथिबो, देन
That is an opportunity for the virus to get enter inside your body system. That means, next. There are many areas through which it can transmit to us. There are actually two kinds of HIV found around the world. First one is HIV-1 and the second one is HIV-2. And the first one is more dangerous. Second one is not spreading so fast, not transmitting with efficiency. Next. And these are coming, it's a history actually, these are coming from these monkeys and chimpanzees. The monkey और chimpanzee पाखरु से virus टा आसी ची हम पाखु inherit है ची केमिति ना monkey की मार की पोड़ी की खाई थी बता मांस के बे सित्ते बड़े आसी कोई भी ता history विषय next. This is the case where 3 earliest known HIV infections प्रथम केबे जना पड़िथिला HIV हेछि बोली हम पृथ्वी पृष्ठरे. That is in 1959. It is in Democratic Republic of Congo. There it is. The second infection that comes, that is 1969 from the tissue sample of a teenager who died in St. Louis. St. Louis is a city actually. The third case is in 1976. Norwegian seller तांका पाखरु बाहर थिला. The first on January 2000 study by Dr. Bert Kober estimates that the first case of HIV infection in 1930. Actually आमे जानी पारिने already सेटा हेछि लोक मानकु आमे जानिला बेले हेलानी 1959 रोगटा फर्स्ट केस आमे जोटा डिटेक्ट कले ऑल ओवर द वर्ल्ड. तेणु गोटे स्टडी करथिले से डॉक्टर जी लेखा हेछि तांगा ना सेथिरे से देखिजंती इन्फेक्शनटा 1930 मसिया पाखापाखि हेछि बट हिस्ट्री सेज बिफोर दैट आल्सो सब मार दियो. That one is the first infection actually in 1675. Now these are research matter, these are research coming from research. माने आमे प्रथमे डिटेक्ट करिया परे पुनी पछुआ खोजिचे कोठु बाहरिची केमिति बाहरिची काकू हेइथिला प्रथमे. these are case studies. प्रथमे सिम्पाजी रू ह्यूमन पे को आसी around 1675. then the follows that cases are. Now we are the problem that is in 1982 that AIDS, first time the word AIDS is used, and this is there is a institute, do you know, that is a premier institute that is called Institute of Pasteur. प्रथम HIV को आइसोलेट करा हितला HIV-1 को, and he is the scientist who discovered it in 1984, Robert Gallo. Now next question is how it spreads. तमे समस्त पिले जानियो भाइरस आम बॉडी भितर को आसे पई गोटे वेक्टर रो आवश्यकता अछि. दैट मीन्स द ट्रांसमिटिंग मीडियम कहा थ्रू रे आसुची. आमे एबे कोरोना भाइरस रे समस्त आस्तिले 2 वर्ष पाखरे कोथरे आस्तला जनरली एयर और ऑन कांटेक्ट विथ द सलाइवा और sputum or anything related to that. But the main drawback is the main drawback here is these are what we have written the area, the 4 major methods that which carries HIV to our system. से थ्रू लिखा है you can have that. सबुठु बड़ा होची infected syringe, infected blood. आमे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं आमे जानी ने आमे हठात सिवियर केस रे गले हॉस्पिटल आमको के इंजेक्शन जन दे देछि किन से इंजेक्शन टा ऑलरेडी इन्फेक्टेड आमे जानी ने तेणु आमे कैरी कले भाइरस टा
Then there are also by birth also from the child, from the mother to its child also. And these are the ways through which generally it comes from the source to source through this body fluid exchange. तेणु आमर जिते बॉडी फ्लूइड अच्छी सबुथिरे प्रायतः बट एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन केसेस वेयर नो इवन दो इट इज बॉडी फ्लूइड HIV is not available. The next one. These are the myths actually. सब दे दिया सब दे दिया. HIV around the people. जदि आमे को लोक HIV लोक संगे रहिबा हमर कोन होतु आमे तो जानने ताको HIV हेछि केते दिन हेलानी इन्फेक्शन हेइ थाइ पारे. तेणु कफिंग स्नीजिंग इंसेक्ट बाइट टचिंग हगिंग वाटर फूड किसिंग एगुड़ाक सब मिथ अच्छी से गुड़ाक होनी एक्चुअली. नेक्स्ट पब्लिक बाथ. दिस आर कैन गेट HIV फ्रॉम लुहरु हबनी बट इट इज ए बॉडी फ्लूइड सालाइवा हबनी. तमें गोटे चामच खाइच तुम भौणी खाईदेला तुम भाई खाइला से चामचटा धुआ हैनी बुझिपार से केस रे भी HIV ट्रांसमिट हेनी इवन दो somebody is infected with that. Sweat यूरिन एगुड़ाक इन्फेक्टेड कैरी हेनी. ओके so this one I have been talked earlier. Minimum 3 to 6 months is required for this window period. इनक्यूबेशन पीरियड आम कहे जो थे कि जना पड़ पार जे HIV होता पारे बा टेस्ट कले जना पड़. तेणु ये 6 मास आम पाखे रहा विंडो पीरियड दैट इज वेरी वनरेबल. आम जापर ना कौन सी उपाय भी आज भी ना आज डेट्रे भी ना. So that is your window period or the incubation period. Next, and these are the methods actually in India how the HIV is being transmitted. What are the main causes? These are, first one is the most important one, and that is why we are organizing this type of meetings. The more percentage, 85.83% contributes to only sexual transmission. जेहेतु तुम मैंने समस्ते एडोलसेंस बॉयज एंड गर्ल्स समस्ते अच्छ ये भविष्य में तुम मैंने बागर हम तुम मानकर छुआ पिला हे देर माने आगु को लाइफ रे ये भाइरस तुम बॉडी भितर पशिवार संभावना बहुत अधिक अच्छी. तेणु आमर प्रथम काम है टू एजुकेट दिस ग्रुप ऑफ पीपुल सो दैट फर्दर द भाइरस विल बी नॉट ट्रांसमिटेड टू द सिस्टम. तेणु से गोटे ब्रेक देवाई हेले तुम मानक प्रथम एजुकेट हवा को पड़ो. तेणु ये जो प्रोग्राम मोटो होती तुम मानक यहाँ तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी पिला कह दरकार ना. योर एज ग्रुप इज इम्पोर्टाट बिकज तमें से बैंड भितर अच्छ जो थे कि ट्रांसमिशन हवार संभावना बहुत अधिका अच्छी. दैट इज वाई. एंड यू सी अनदर मेथड इज कॉल्ड IDU जहाँ मैंने ड्रग्स नौकरी इंजेक्टरी ड्रग्स यूनिट जो मैंने नौकरी निशाखोर. देन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट आर देयर प्रीनेटाल जन्म बेले कथा कहूली है. Then there are other sources also known as unidentified objects, and this is the state's condition of our country in HIV. तेणु जो मैंने पिले तमें आगु को फ्यूचर को यही सब स्टेट को जीव बी केयरफुल देयर. दीज आर द रेड जोन्स ऑफ HIVs. तेणु आम भी समस्ते जिते आम कौन जगह ट्रावेल करुचे कौन करुचे आम कंट्री कंडीशन कौन आम जाना दरकार HIV उपरे. तेणु आम पिला माने तो कुआडे को यूनिवर्सिटी रे पढ़िबो के बांग्लोर रे पढ़ुची के हैदराबाद रे पढ़ुची विभिन्न जगह रे पढ़िया को जाउची. तेणु से गुड़ा सब नाली रे अछि. यू सी हाँ सॉरी आउ गोटे देख गोटे कॉर्नर स्टेट अच्छी दैट इज नागालैंड. यू सी इट रेड रे अच्छी रेड जोन रे नागालैंड. हाँ सेठी मध्य
ये जो एड्स रोगी संख्या बहुत अधिका तेणु देयर इज मोर चांस दैट यू आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन ऑफ दिस HIV when you are moving out through these states. Next one. Then next question is ठीक अच्छी HIV हेची बोली जानिबा केमिति? What are the methods? The testing प्रथमटा होची ELISA test is a very costly test actually बाहर कौन सी लैब रेटा हुए नहीं. It is only government certified lab. तमर नुआपड़ा जिल्ला रे अछि कि नाही मु जाननी कि अछि सर हाँ तेणु ELISA टेस्ट मेथड रे ही से जना पड़िबो हैला आ गोटे अछि वेस्टर्न ब्लड एसे सिस्टम आ गोटे अछि रैपिड टेस्ट एंटीजन किट अछि गोटे सेथरे भी तमे जानि परिबो तेणु ए टेस्ट गुडा को सब दरकार देन तमे जेम जानले जे चारिटा मेथड रे मेन ट्रांसमिट होउची तेणु प्रोटेक्शन इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल दोज 4 स्टेजेस 4 जो बाउंड्री अच्छी ताकू जगिले आम पाख इन्फेक्शन आसबनी तेणु से जो बाउंड्री जगह जो बाड़ से बाड़ गुड़ाक सब आम जाना दरकार मल्टीपुल जमती से लिखी से जो जिनस गुड़ाक अवॉइड मल्टीपुल पार्टनर मोनोगामस हवा दरकार आम कंट्री समस्त मोनोगामस जनरली नॉट पॉलीगामस ओके देन प्रोटेक्टेड सेक्स देन these are syringe needle that mean you not only you when you are inside a hospital you must be careful enough for these devices injection हो catheter लगा हो धर saline चलियो catheter लगा हो ये सब जिनस जो होउची तम बाप मां कटे हो भाई भौणी कटे हो तमटी हो जदि तुम हॉस्पिटल रे अछ तमे माने केयरफुल होवा दरकार जे नुआ लगा होउची कि नाही देखिवा दरकार आमे से जिनस गुडा तेणु we must break the barriers we must put the barriers for the further onward transmission next and this is the agency that we have in India who is dedicated for control of HIV or the condition that is called AIDS that is NACO and under which we are all available for today's program next one and it started in year 2017 actually the act comes in our constitution and then after it is then there are certain sites where you can refer to your all these information I am also collecting all these information it is not available these are the sources I collected from it and major advice is for you these peoples are जिते बड़े एटलिस्ट आम समस्त तो देह खराब सब बेले हो नहीं किंतु समस्ते बारिक दुकान जाऊे कमन ना नहीं तो बापा भी जाऊँ तू भी जाऊँ समस्ते जाऊँ हाँ कि नहीं तेणु आम जो क्षर होगा जाऊे बाल काटिया को जाऊे वी मस्ट बी केयरफुल एनफ सेटा हूँ तुम कौन जड़े धर से जो रेड जोन रे जाइए धर तोर बालटा बढ़ीगला तू काटबुनु कि काटबू तेणु आम से जगह गुड़ाक अवेयर हवा दरकार से जो जगह गुड़ाक जो मूव करुचे वी मस्ट बी अवेयर एनफ आउ जो कहली सेकेंड स्टेज रे द मेडिकल डिवाइसेस व्हेन वी आर यूजिंग इट द मेडिकल डिवाइसेस वी मस्ट बी केयरफुल ओके थैंक यू ऑल थैंक यू सर